कौन स्टाइल कटिंग करे ना नॉर्मल? स्टाइल कटिंग करे ना नॉर्मल करे? स्टाइल कटिंग के लिए कौन कौन स्टाइल कटिंग करे मुझे बड़ा जैसे हो गया काटी दम नहीं है छोटा करे जो ना सेटिंग लेन रखे और बोला छोटा करे ना मैं छोटा कर दिया मैं ए तैती कोन काटे छोटा करे ना बेबी कोटा ଭଲ ଲାଗିବ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଝିଅ काट दो क्या अगर प्लस बेबी कर काटते ଆଉ କାଟି ଦିଅ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନା बेबी कर काटियो ना एई टाइप रो जो फेदर काटते ने एटी मोडी रो जदी काटियो समझा नहीं बेबी कर काटियो हेलो एवरीवन मु चिन्ह स्वागत कर आज हेयर कटिंग ब्लॉग वीडियो को। तो आम आज जे क्लाइंट थे सी बहुत छोट बेबीटी थे तो तांकर आज फेदर कट करला तो फेदर कट से कहीं पसंद करते ना किसी न्यू लुक दरकार था जहाँ तो बेबी कट टाइप ऑफ देखा भी जीव कारण स्कूल टाइप ऑफ स्कूल टाइम रे जो पिला माने स्टाइलिंग कटिंग कर जाते स्कूल को प्रायतः बिगड़ा ही सोदा खाई था कारण आम मैंने भी सोदा खाईचु यदि कौन स्टाइल मुंड कुंडे था कि स्टाइलिश कटिंग करता तो आप जानते बेबी कट छड़ा कौन कटिंग आप स्कूल लाइफ रे करवा प्रायतः मना ही होता है कारण से छुआ मान क्यारियर पर बहुत प्रभाव पकई था आम ये भल भाव जानी था तो से किसी कटिंग दरकार था जमीक कि पाखापाखि बेबी कट देखा हो लुक भी सुट कर तो कटिंग भी गोटे लुक क्रिएट कर सहित जना पड़ ना से सब बेस्ट कटिंग हूँ फेदर कट तो फेदर कट रिपोर्ट करी से खास लेंथ जमीक जो टाइप लेंथ चाहूँगे और जो टाइप लुक चाहूँगे आ फ्रंट किस कल टाइप चाहूँगे आ बैक साइड नॉर्मल लुक चाहूँगे तो फेदर कट टू बेसी भल कटिंग आ कौन हो पारे तो ये मुझे रिपोर्ट करी फेदर कटिंग करा तो फेदर कटिंग स्टार्ट करी मु गाइडलाइन कटिंग तो फास्ट गाइडलाइन मु कट कर लेंथ दरकार था पचार नहीं क्लाइंट को लेंथ बहुत ही मीडियम दरकार था लेंथ रू पाखापाखि अध सेकेंड पाखापाखि मो हेयर कट करी देखिए गोटे सैड्रु मो कटिंग स्टार्ट करते जमी पचारि गोटे सैड्रु के हेयर दरकार रखा तो से हिसाब से रखिक बाकी हेयर को मु कट करी तो मुझे कटिंग स्टार्ट करी जूता काटे जमा इच्छा था से लंग रे से कौन प्रकार कटिंग करेंगे कि माँ चाहते हेयर टे छोट करा से बाध्य होकर छोट करते तो जो स्कूल टाइम छोट पिला तो चुट्टी तो सब छोट पिला कटे दिखती आजिकल पिला काटे के पसंद करना कटिंग करने को किंतु आम टाइम तो आमको नंडा ही कर दिखती घर लोक किंतु आजिकल पिला स्टाइल टी रखा मेंटेन करने को बहुत पसंद तो प्राय कटिंग आम से लेंथ हिसाब से कटिंग करवा तो फास्ट गाइडलाइन कटिंग आम तो स्टार्ट होता है आम क्लाइंट को ऑलरेडी पचार था गाइडलाइन केते दरकार जिते गाइडलाइन दरकार ताठू टिके लंग रखी था कारण कटिंग कलापर से सैज टिकेटा पड़े थाए से आम जस्ट टिके छाड़ी था पाखापाखि टीपे अध इंच पाखापाखि एमती छाड़ी देता तो से हिसाब से कटिंग स्टार्ट करते तो गाइडलाइन कटिंग कलापर आम प्रोफाइल सेक्शन करने तो प्रोफाइल सेक्शन आप जानते हैं 4टा सेक्शन होता है किंतु मुझे 3टा सेक्शन करी 3 पार्ट डिवाइड करते एयर टू एयर पार्ट जो डिवाइड करता है ताकू आम सब करता से बेसिक सेक्शन होता है तो जोटा इयर टू इयर पार्ट डिवाइड करी 2 साइड्रे आउ बैक साइड्रे गोटे सेक्शन करती तो 3 पार्ट डिवाइड करी आम जो इयर टू इयर पार्ट डिवाइड करते फ्रंट्रे बस ताकू आम पुणी आ गोटे सेक्शन करवा जोटा ट्रायंगल सेक्शन तो देख पाते मुझे जो टाइप सेक्शन कर ट्रायंगल सेक्शन कर फ्रंट्रे तो से सेक्शन को लेकिन आमको फ्रंट्रे कट कर 90 डिग्री पूरा हेयर को कम करके तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट अनुसार आम कट करवा क्लाइंट जब छोट चाहे छोट कर क्लाइंट न चाहूँ से जगह कट करा आम से कट करवा ना कदा भी आम गोटे ट्रायंगल सेक्शन करवा जब क्लाइंट न चाहूँ तापर बास आमको इयर पार्ट सेक्शन को नबार अच्छी इयर पार्ट सबुजा सेक्शन एक ने पार्ट बाय पार्ट ने 3 पार्ट डिवाइड करेंगे बस पतला पतला सेक्शन ने आउ 145 डिग्री फिंगर को डाउन करेंगे तो फिंगर डाउन कथा आप जानीपारे यदि फिंगर डाउन आप ठीक से करें तो 90 डिग्री कम कर केवल 45 डिग्री फिंगर को सीधा कर रखिले आप गोटे सुंदर फेदर लुक पाइपर तो सेमती बुझीपारना आप डायरेक्ट सीधा नो साइड्रे नहीं कम कर कट करने द्वारा आप गोटे सुंदर फेदर मिल गाइडलाइन अनुसार तो गाइडलाइन अनुसार आप कट करेंगे तो आप सुंदर फेदर टी मिल सहित गोटे सुंदर लुक टी मिल
ଆପଣ ସେକ୍ସନରୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନରୁ କଟ୍ ହେବନି, କାରଣ ଆପଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ ଅନେଇକି ହିଁ କଟ୍ କରିବେ, କଦାପି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଟ୍ କରିନେବେନି। ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ କଟିଂ ହେଇଯିବ ଲେୟାର, ତ ଆପଣ ଲେୟାର କିମ୍ବା ଷ୍ଟେପ୍ ଲୁକ୍ ହେଇଯିବ, କଦାପି ଫେଦର ରହିବନି। ତ ଫେଦର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚି ରଖି କାଟିବାର ଅଛି, ଆଗେ ଅଧିକା କାଟିବାର ଅଛି, ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ କଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କଟ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କଟିଂ ପରେ ଆମର 3ଟାକ ସେକ୍ସନ୍ କଟ୍ କରିନେଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ କଟିଂକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ହେୟାର ଥିଲା, ହାଲକା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଥିଲି। ବାସ୍ ଆମକୁ କମ୍ କରିବାର ଅଛି ନା କୋମ୍ କରିବାର ଅଛି 45 ଡିଗ୍ରୀରେ, ଆଉ ବାସ୍ ତାକୁ କଟ୍ ଲଗାଇବାର ଅଛି ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ କୌଣସି ଲୁକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଟିଂ କାହିଁ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ହାଲକା ଲେୟାର୍ସ ଦେଇଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହେୟାରର ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ବାସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଡାଉନ୍ କରି କୋମ୍ କରି କଟ୍ କରିଥାଉ 45 ଡିଗ୍ରୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାଲକା ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଲେୟାର ଲୁକ୍ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କଟ୍ କରିଥିଲି, ଜଣେ ମୋ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା କଲର୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ କଲର୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପୁରା ହେୟାରରେ ଫେଦର କଟିଂ କରିଥିଲେ ସର୍ଟ ଲେନ୍ଥରେ। ତ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆଉଟ୍ କର୍ସ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆଙ୍କର ମୁଁ କରିବି ଇନ୍ କର୍ସ ଆଉଟ୍ କର୍ସ ଭିତରେ ଲୁକ୍ର କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କଟିଂ ସେମ୍ ରହିବ, ସେକ୍ସନ୍ ବି ସେମ୍ ରହିବ, କେବଳ ଇନ୍ କର୍ସ ଆଉ ଆଉଟ୍ କର୍ସ ଲୁକ୍ କେମିତି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ କଟିଂ ଆମେ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେମିତିକି ସେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟଙ୍କର କରିଥିଲେ, ଆମେ କଟିଂ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ଆଉ ସେମ୍ ଲେନ୍ଥକୁ ସେମ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବି ମୁଁ ଏଠି କରିଛି। ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କଟିଂ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଅଦର ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିଯାଇଥିଲି ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା କଟ୍ କରିଲା ପରେ। ତ ଏପଟ ଅଦର ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ମୁଁ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିଥିଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ହାଲକା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ସେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଅଲଗା କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର କଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 45 ଡିଗ୍ରୀରେ, ପୁରା ହେୟାର କୋମ୍ କରିଥିଲି, ବାସ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ କଟ୍ କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ ହାଲକା ଜିଗଜାକ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଜିଗଜାକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କରିଆସେ ଜିଗଜାକ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆସେନି ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜିଗଜାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲେୟାର୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇନହାନ୍ସ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ନ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାସ୍ ଆମକୁ ସେମ୍ ଆମର ସେଟିଂ ଲୁକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମିକ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ବାସ୍ ଆମକୁ କୋମ୍ କରିବାର ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେମିତିକି ଟିକେ ବି ଟ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ ରହିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ସାରା ଯେଉଁଠି ଜାଗା ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେକ୍ସନ୍ ସହିତ ବି କାମ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ସେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ନିଜ ହିସାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେକ୍ସନ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି କଟିଂ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ବହୁତ ସାରା ସେକ୍ସନ୍ ଧରି କଟ୍ କରିପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଟ୍ କରିନେଇଛି ପଟାପଟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ହେୟାରରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆସି ହିଁ ଯାଇଛି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସୁନ୍ଦର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟେ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେମ୍ ଲୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା କଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ବାସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆମେ କୋମ୍ କରିବା, ପୁରା ହେୟାରକୁ ନୋଜ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାହିଁଲେ କଟ୍ କରିପାରିବା, ଚାହିଁଲେ ଫିଙ୍ଗର ଡାଉନ୍ କରି 45 ଡିଗ୍ରୀରେ ବି କଟ୍ କରିପାରିବା, ଆଜ୍ ୟୁ ୱିଶ୍, ଯେମିତି ଆପଣ କାଟିବାକୁ ସୁବିଧା କରିପାରିବେ। ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲାଷ୍ଟଟା ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜମା ବି କଟିଲାନି, ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ବାକି ହେୟାରକୁ ବି ଆମେ କଟ୍ କରିନେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କଟିଂ ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରିଲେ ତ। ତ ବାସ୍ ଆମକୁ କଟ୍ କରିନେବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆମକୁ କଟ୍ କରିବାର ଅଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍, ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୋମ୍ କରିବା, ତାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ନେବା, ତାପରେ ଆମ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଡାଉନ୍ କରିବା 45 ଡିଗ୍ରୀରେ, ହାଲକା ଡାଉନ୍ କରି ଫିଙ୍ଗରକୁ ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଟ୍ କରିନେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେୟାରଟା ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ହେୟାରକୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ସେ ହେୟାର ମିକ୍ସ ହେଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଇନହାନ୍ସ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଜ ବି ହେଇଯିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେକ୍ସନ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜୁମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାଇଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ନେକ୍ ରୋଲ୍ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟକୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ନେକ୍ ରୋଲ୍ ୟୁଜ୍ କାହିଁ କରେନି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଓମେନ୍ କ୍ଲାଇଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ ରୋଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇନଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରୋଫେସନାଲି ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଓମେନ୍ କ୍ଲାଇଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେକ୍ ରୋଲ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯଦି ମେନ୍ କ୍ଲାଇଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ ରୋଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଓମେନ୍ସ କ୍ଲାଇଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛେ, ତ ନେକ୍ ରୋଲ୍ରେ କୌଣସି ସିନ୍ ହିଁ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନେକ୍ ରୋଲ୍ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ନେକ୍ ରୋଲ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଦରକାର ହିଁ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିନ୍ଧୁନଥାଉ, କେବଳ ଆପ୍ରନରେ ହିଁ ଆମର କାମ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ ରୋଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ପିନ୍ଧେଇ ବେକାରଟାରେ ଖୋଲିକି ପକାଇବା କଥା, କିଛି କାମ ହିଁ ତା'ର ନଥାଏ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ହେୟାର ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ବେକ ସାଇଡ଼୍ରେ କଇଁଚି ବାଜିଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବେକ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରାହେଇଥାଏ ହେୟାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ ରୋଲ୍ ପିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ।
आम तो झील पिला चुटी लंग लंग चुटी आमको बस सेक्शन रे कट कर अच्छी तो आमको कौन दरकार नेक रोलर काम तो बहुत सारा क्लाइंट आमको बहुत सारा व्यूअर्स जो मैंने रही से आमको बहुत सारा कमेंट देते बहुत सारा थैंक यू समस्त को एत सारा सुंदर सुंदर कमेंट देथिबारु किंतु सॉरी मु नेक रोल यूज करेनी से केवल यूज करेनी जदि आप चाहते नेक्स्ट देखिया मु नेक्स्ट टाइम जो मोर जिनस मगेबी से मगेली आपण भिडियो निश्चय देखेबी नेक रोल वीडियो। तो चलन देखा ब्लो ड्राई केमती करछे तो मु इनकर्स ब्लो ड्राई करछि जमा भी आउटकर्स करें जमती कि मुझे इनकर्स ब्लो ड्राई करी इनकर्स आमर फेदर लुक केमी देखा जाए जमीती कि कटिंग किसी हेयर ही ना बुझिया लोक बुझीपारे न बुझिया लोक बुझीपारे कि हाँ चुटे किसी गोटे कटिंग होली जो मैंने बुझीपारती देखी जानते से जाने हाँ किसी गोटे कटिंग हो जार लुक इनहांस भी हो। तो चलन देखा केमी आम ब्लो ड्राई हो। तो पूरा ब्लो ड्राई पर देख पाते हैं पूरा ब्लो ड्राई करने पूरा हेयर को बैक साइड को कम करी बस देख पाते बैक साइड कम पर आम लुक केते सुंदर भाव देखा जाउची। तो मु पूरा कैमेरा को बुले के आप देखा जाउची इन कर्ल्स आमर लुक केमी देखा जाए देख पाते और फ्रंट जो सेक्शन आम ट्रायंगल सेक्शन कट करते गोटे सुंदर लेयर फ्रंट रे तापर आम इन कर्ल्स लुक देख पाते बहुत सुंदर देखा। तो आप लुक केमी लगे कमेंट कर निश्चय करें भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चय करने।